Good morning students. Today I am going to start the another part of the unit and dimension. तो आम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे डायमेंशन कौन जानी आज डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा जोड़ा बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी द्वारा फॉर्मूला क्रिएट होइतिबो is like the square bracket of mass to the power A into length to the power B into time to the power C जदि आम यही भाया गोटे फॉर्मूला आकार लिखुंट दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला जदि आम डायमेंशंस कौन आम तो प्रीवियस क्लास जानी जिते सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो अच्छी से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी द्वारा जो फिजिकल क्वांटिटी डिराइव हम एवं तार केते पावर रेज करुच्ची से पावर को आम कहवा डायमेंशंस एवं नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जदि यही भाया स्क्वायर ब्रैकेट करके आम लिखुंट एवं से पावर रेज करकिना गोटे फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन होची दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जांपल कहवा एग्जांपल आम कौन कह पार सपोज मु कहबी एरिया एरियार डायमेंशन फॉर्मूला एवं डायमेंशंस क्या कहबा सो एरिया कैन बी एक्सप्लेन बाय हेल्प ऑफ लेंथ इनटू लेंथ और लेंथ इनटू ब्रेथ यदि रेक्टेंगुलर फील्ड आम नौकरी ताने लेंथ इनटू ब्रेथ एंड ब्रेथ ऑल्सो ए लेंथ सो एनी एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू लेंथ दैट इज स्क्वायर ऑफ एल and that 2 is the dimensions of area of length. So how can I write the dimension formula of area? M to the power 0, L to the power 2, T to the power 0. That is the dimension formula of area. जदि आम मास लेंथ टाइम बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आकार में एक्सप्लेन करवा ताले सी यही आकार रे रिप्रेजेंट हम क्लियर माय स्टूडेंट्स सो सबु फिजिकल क्वांटिटी को आम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू इक्वेशन एटा हूँ गोटे डायमेंशनल इक्वेशन कौन कह डायमेंशनल इक्वेशन भी कह जाई पारे और डायमेंशनल फॉर्मूला तो यही डायमेंशनल फॉर्मूला आकार रे सबु फिजिकल क्वांटिटी को आम लिखिपर सो तापाई गोटे आम टेबुल बनवा से टेबुल रे आम डायमेंशन फॉर्मूला लिखा डायमेंशंस लिखा एवं एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट को एक्सप्लेन करवा सो चलो पे मैंने गोटे डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट को लेकिन गोटे टेबुल बनवा से टेबुल ले आमे सीरियल नंबर नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी name of the physical quantities formula convert into M L T form dimension formula
in m to the power a, l to the power b, t to the power c within square bracket এই ফর্মুলা লিখিবা dimensions a b c, that means power of a mass, length, time is called dimensions. So ए टेबल आम एति लिखले नेक्स्ट आम आउ दुटा को ऐड करवा गोटे हूँ यूनिट एंड एसआई यूनिट आ गए सीजीएस यूनिट। सो आम एति करवा तुम बही रे मिनिमम 60 और 70 फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन आ यूनिट दि जाइए। आम ये मात्र 10-15 टी यूनिट डायमेंशन मु शिखेदेवी से ढांचार सबुगुड़िक एक्सप्रेस होती सबुड़ा मन रखा दरकार ना। 15टा कि 20टा फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन मन रखिले तुम इजिली धीरे 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 फर्स्ट ईयर कंप्लीट है बेलू आउ 50टी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन मन रखि सारी। सेकेंड ईयर कंप्लीट है बेलू आउ 50टी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन एंड यूनिट मन रखि सारी। तेणु एट ए टाइम सब जिन मन रखा दरकार ना। केमिति यूनिट डायमेंशन लेखा जाउची ताकू खाली जानिबा दरकार। सो क्लियर माय स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन इज area represented by the symbol capital A, and that A explained by length into breadth, and that A explained according to the mass, length, time, that is L into breadth also L, that is equal to L square। मुझेमती करुच्ची सेमती ही कन्वर्ट हम से ढांचारे आग फॉर्मूला को तुम मन रख फॉर्मूला को जानीगला से ml t केमती कन्वर्ट होटा शिखा दरकार। सो एल स्क्वायर लिखि सारापर आम डायमेंशन लिखा m रो पावर m रो कौन सी रिलेशन ना, हेन्स द पावर इज 0, m टू द पावर इज 1 इंटू l पावर 2 अच्छी n टू t ର power 0 ଅଛି। and dimensions of a b c, that means 0 mass ର power a, length ର power 2, that is b, and time ର power 0, that is c। so that is the dimensions and dimension formula of area। clear my students? एबे हम सेकेंड रे देखिबा another physical quantity, that is volume V। volume can be explained of any substance, that is length into breadth into height। जेकोसी क्षेत्र में आम जब वॉल्यूम बाहर करवा ताने 3टी लेंथ रो प्रोडक्ट दरकार। सो दैट वॉल्यूम V also explain length L, breadth also length, and height also length, that equal to L cube। the power of a L is 3। so the dimension formula of volume is m0 L3 T0 within square bracket। that means m0 dot L3 means m0 गुणन L3 into T0, that means result is L3। m0 means 1 into L3 means L3 into T0 means 1 into L3 into 1, that is L3। so एको खाली लेखिबार अछि एई भलिया पैटर्न ले लेखिले आमे ताको डायमेंशन फार्मूला कहबा। डायमेंशंस कोन कहबा? 0 in mass, 3 in length, 0 in time। so 0 plain bracket देखिए 0 3 0 is the dimensions, and square bracket करके m0 L3 T0 लिखले, that is called dimension formula। एबे 3 नंबर में लिखिबा density। density rho, density can explain by the symbol of rho। what is this? rho। and that rho can explain, it is
those are called the derived physical quantity which can explain by the definite power of the fundamental physical quantities, and the density can explain by the help of formula mass divided by volume, mass divided by volume, and it can be converted by the MLT form, mass represented by the capital M and volume represented by the LQ. MLT फॉर्म रे ताको हमें कन्वर्ट कर देले, फाइनली एटा आसीगला m रो पावर 1 l पावर -3, l पावर केते हला -3. सो एबे ताको हमें डायमेंशन फार्मूला कर लिखि परिबा m टू द पावर 1 l टू द पावर -3 t0 एंड डायमेंशंस आसीबो 1 -3 0. सो यदि तुमको क्वेश्चन आसिला व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी, देन तुम स्क्वायर ब्रैकेट करके लिख पारिबो m1 l -3 t0 एंड व्हाट इज द डायमेंशंस, तुम लिखिबो 1 इन मास -3 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम. आगो एमिति लिखि दे कि तुम इजीली ताको लिख पारिबो 1 इन मास मींस मास रो केते पावर रे जे 1, दैट इज द डायमेंशंस, एंड l रो केते पावर राइज -3 एंड t रो पावर केते राइज 0. सो मास लेंथ टाइम रो पावर उडी को एक्सप्लेन करले डायमेंशंस कहबा, एवं जदि हमें गोटे फार्मूला कर लिखि चंती ताको हमें डायमेंशन फार्मूला कहबा. क्लियर? नेक्स्ट, फोर, एबे हमें देखिबा स्पीड. स्पीड स्मॉल v आकार रिप्रेजेंट करवा और s बहुत जगह स्पीड को s आकार रिप्रेजेंट करा जाए. देखिबो बहुत जगह केमती सिंबलिक रिप्रेजेंट करा है s, दैट s इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, एंड दैट s इक्वल टू डिस्टेंस कैन बी रिप्रेजेंट बाय द l and time represented by the t, and that equal to l1 t minus 1. सो ये जो फॉर्मूला गुडी को तुम आगे भल भाव मन रखियो. जदि फॉर्मूला तुम मन रही गला ताहले तो आमर जो फर्स्ट ईयर रे पाठ अच्छे डायमेंशंस कौन, डायमेंशन फॉर्मूला केमती लिखिबा सेटा तुम इजीली बुझी पारिबो. फॉर्मूला गुडा को फास्ट जानिया पय पड़ियो. क्लियर माय स्टूडेंट्स? सो स्पीड को हमें एक्सप्लेन कर परिबा डायमेंशन फार्मूला आकार रे m0 l1 t minus 1 एंड द डायमेंशंस अनुसार लिख परिबा 0 1 -1, दैट मीन्स 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम. सो क्लियर? एइबोली भाव रे आमे गोटे पर गोटे फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करि चलिबा. द डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला. 5, वेलोसिटी. वेलोसिटी को आमे v मध्ये नै परबा, दैट v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. अतः डिस्प्लेसमेंट माने कोन? दूरत्व बाय समय. दूरत्व मध्य गोटे लेंथ. सो वेलोसिटी आल्सो एक्सप्लेन बाय द लेंथ बाय टाइम, दैट इज l by t, and that l t minus 1. सो फाइनली डायमेंशन फार्मूला कर लिखले केते हबो m0 l1 t minus 1, and that is 0 1 -1. सिंपली आमे स्पीड रे जहा भाला वेलोसिटी रे मध्ये सेया भाला. ताले एटी हमें कहि परिबा स्पीड और वेलोसिटी हैविंग द सेम डायमेंशंस एंड द सेम डायमेंशन फार्मूला. क्वेश्चन पडिबो एमिति दीटा फिजिकल क्वांटिटी कुह जहार समान डायमेंशंस रहितिबो. सो हमें कहि परिबा स्पीड एंड वेलोसिटी. क्लियर? नेक्स्ट, एबे हमें कर परिबा वेलोसिटी परे 6th रे एक्सीलरेशन.
acceleration acceleration माने त्वरण गोटे वस्तुर त्वरण केते अछि ताकू आमे एक्सप्लेन करबा को गले ताहा velocity divided by time करिया पई पड़िबो velocity divided by time so a is equal to velocity केते आसीबो velocity होच v that can be represented by l t minus 1 and time is t1 that is finally l1 t minus 2 ऊपर velocity अछि तार ml t फॉर्म होच l t minus 1 divided by time ro ml t फॉर्म होच खाली t that equal to एला l t minus 2 so dimension formula आसीजिवो m0 l1 t minus 2 and dimensions आसीबो 0 1 minus 2 clear my students गोटे परे गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो आमे जतले फार्मूला जानि नबा ता परो फिजिकल क्वांटिटी रो ता सहित रिलेशन कोन अछि इजीली जानि आमे सबु डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशंस लिखि देबा पिला माने एबे another physical quantity that is called force आमे नवा उपरु मु लिखौची देखो गोटे फिजिकल क्वांटिटी केमते अन्य फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करछि त माने एक्सीलरेशन एक्सप्लेन बाय हेल्प ऑफ द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज नोन एज द एक्सीलरेशन सो एक्सीलरेशन हमें जानि गला परे हमें पुनी नेक्स्ट फोर्स इजीली जानि नबा एवं तार डायमेंशन फार्मूला बा डायमेंशन को मध्य लिखि परिबा next which is 7 that is force bolo force F and that force explained by mass into acceleration that means mass को हमें कैपिटल M into acceleration को A लिख परिबा अतएव ताको यदि mlt फॉर्मेट रे हमें ताको एक्सप्लेन करिबा that is केते हबो F equal to mass power 1 into acceleration में लिखते L1 t minus 2 ये सुनो so acceleration रो mlt फॉर्म होचु L1 t minus 2 ता पूर्वरु मास रहिला प्रोडक्ट है कि तो रिजल्ट आसी गला डायमेंशन फार्मूला लिखिया पई m1 L1 t minus 2 and dimensions आसिला 1 1 minus 2 clear एबे आसिला एट फोर्स जानला परे हमें मोमेंटम हमें वर्क कार्य को मध्य एक्सप्लेन करि परिबा एंड दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तुमको सार पढ़ेबे डिस्प्लेसमेंट जे ए जो प्रोडक्ट टा क्रॉस हबो ना डॉट हबो मु एटी सिंपल प्रोडक्ट आकार लिखिछि एला मैग्नीट्यूड आकार लिखुछि सबुडा मु मैग्नीट्यूड आकार लिखुछि तुमको किंतु एक्चुअली सीताराम सर जो पढ़ेबे वेक्टर और स्केलर पढ़ौचंती सेइतरे से आइडेंटिफाई कर देबे को फिजिकल क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट आकार एक्सप्लेन होउछि को फिजिकल क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट आकार एक्सप्लेन होउछि आ कोडा सिंपल सो सही बाबत रे से डिटेलिंग करके कहिबे so that is force into displacement
मु मैग्नीट्यूड आकार रे कहूँ सो दैट W इज इक्वल टू फोर्स जगह आम लिखिपर m1 L1 t minus 2 MLT फॉर्म रे इनटू डिस्प्लेसमेंट L1 तो रिजल्ट आसीगला m1 L2 t minus 2 hence the dimension formula within square bracket is that m1 L2 t minus 2 is the dimension formula and the dimensions is that 1 in mass 2 in length minus 2 in time. Clear my students? Another जेहेतु फोर्स आम जानी 8 पर 9 आम प्रेशर एक्सप्लेन करि परिबा प्रेशर माने चाप चाप को आम एक्सप्लेन करि परिबा फोर्स जानी सारचंती दैट चाप इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया and force can be explained by MLT form is that is P is equal to m1 L1 t minus 2 that is force can explain m1 L1 t minus 2 divided by area can explain by help of the MLT form L square and the result is that m1 L2 ये होचु 1 minus 2 that is equal to minus 1 t to the power minus 2 so finally you write the dimension formula that is m1 L minus 1 t minus 2 and the dimension is that 1 in mass minus 1 in length minus 2 in time. So question arrange hoichi je what is the dimension formula of the pressure. You write the square bracket of m1 L minus 1 t minus 2 how can calculate it आम ये प्रोसीड्यूर गले आम जानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया एटा मन रखा मिले फोर्स डायमेंशन को मन रखा डिवाइड एरिया डायमेंशन को मन रखा हरण करवा एवं लिखा प्रेशर परे आम लिखबू लिनियर मोमेंटम linear momentum also represented by the symbol of P and that can be represented by the P is equal to mass into velocity परिवेग sorry momentum आम कही परिबा मास इंटू वेलोसिटी तो मास आकार में कौन लिख परिबा मास जगह में कौन लिख परिबा P is equal to m1 velocity जगह L1 t minus 1 that result is that m1 L1 t minus 1 that is square bracket with लिखले mo dimensions and dimension आसला 1 1 minus 1 so linear momentum माने संवेग रो फॉर्मूला आसला mass into velocity वस्तुत्व गुणन परिवेग संवेग तो संवेग आसीगला मास इंटू वेलोसिटी तार डायमेंशन को मन रखले यही भाव में आम 10टी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कले एवं तार डायमेंशन को लेखि पारे एबे आम डायमेंशंस लेखि सारा परे तार यूनिट को मध्य इजीली लेखि परिबा हाउ कैन इट इज सो यूनिट लिखवा एबे चलो आम आउटे टेबल बनैबा जो थे कि यूनिट इजिली मेंशन हो पारथबो एमती जेमती टेबल बनाई सेमती हम डायमेंशन परे एसआई यूनिट आउ सीजीएस यूनिट रहिबो सो देख मु एई देटी लाइन काटी देली
अच्छा यापर मुझे लिखी कन्वर्ट इनटू एमएलटी फॉर्म पर मु लिखी सीजीएस यूनिट एवं ये लिखी एमकेएस यूनिट ऑलरेडी तो डायमेंशन मु 10टा फिजिकल क्वांटिटी लिखिदेली मु एबे देख जो जो फिजिकल क्वांटिटी ब्लैक बोर्ड रे बर्तन व्हाइट बोर्ड रे अच्छी तार आमे केमती यूनिट एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट लिखिबा तापरे बैक करबा सो नाउ चलो फर्स्ट स्टार्टिंग रो आरंभ करिया बस फर्स्ट वन रे में कौन लिखते एरिया दैट इज एरिया एरिया रा फॉर्मूला थिला a इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ ताको एमएल रे में कन्वर्ट कले करथुले लेंथ रा को लेंथ ब्रेथ रा को मध्य लेंथ दैट इज इक्वल टू l स्क्वायर होतला कि नहीं तो ये सीजीएस सिस्टम रे लिखियो देखो वेरी इंपोर्टेंट जिनिस गुड़िक यहाँ शिखी गले तुम सब फिजिकल क्वांटिटी यूनिट जानी परिबो सीजीएस एमकेएस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रनिंग यूनिट आमे जहाँ भी पढ़ा सबुथिरे सीजीएस आउ एमकेएस यूनिट ही दरकार पड़िबो एपीएस यूनिट बेसी दरकार पड़िबो नाही सो एटी जो एल स्क्वायर लिखा गला एल स्क्वायर कैन एक्सप्लेन बाय द एरिया L means length टा सीजीएस यूनिट रे कोउथरे मेजर करा जाए सेंटीमीटर मेजर द लेंथ ऑफ दिस यूनिट सो फाइनली L स्क्वायर जगह में केते लिखिबा सेंटीमीटर रो पावर केते अछि स्क्वायर तो लेंथ जगह सेंटीमीटर 2 जगह 2 लिखा गला पावर हे गला सेंटीमीटर स्क्वायर सेमती एमके सिस्टम रे हमें लेंथ को कोथरे मेजर करबा मीटर तो आमे मीटर लिखिबा तार पावर अछि 2 लिख देले वेरी सिंपल आमे जदी कन्वर्ट कर देले तार फार्मूला को कन्वर्ट कर देले एमएलटी फॉर्म रे तापरे आमे एमकेएस ऑफ सीजीएस यूनिट इजीली लिखि परिबा सो अनदर फिजिकल क्वांटिटी सेकंड कोन थिला वॉल्यूम which can explain by help of length breadth into height and that is volume is equal to length explained by length L breadth also explained by length and height also explained by L that result is L to the power 3 so L asila puni se L asila so L सेंटीमीटर आकार एक्सप्लेन हबो सीजीएस यूनिट रे सो दैट फाइनल लिख परबा सेंटीमीटर रो होल क्यू इज द यूनिट ऑफ सीजीएस एंड एमकेएस यूनिट रे लेंथ को कोथरे मेजर करा जो मीटर तार पावर हे गला 3 क्वेश्चन पडिबो व्हाट इज द एमकेएस यूनिट ऑफ वॉल्यूम तमे लिखिबो खाली मीटर क्यूब व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब एटा देखो केवल ई फार्मूला को लक्ष्य करके ना आमे इजीली लिख देउ नेक्स्ट 3 डेंसिटी रो and density rho explained by the help of the formula mass divided by volume. Mass divided by volume. That can be explained by the MLT form, that is mass can be explained by the M and volume can be explained by the MLT form is LQ. So result is that m to the power 1 and LQ टा ऊपर चली गले L to the power minus 3. So देखो एटी मास अछि तो मास को सीजीएस यूनिट रे को यूनिट द्वारा मेजर करा जाय सीजीएस रो ग्राम. So that is G, gram G, small g to the power 1 into length को कोथरे मेजरमेंट करा जाए सेंटीमीटर, that is सेंटीमीटर कौन हबो सेंटीमीटर पावर केते अछि -3. So gram to the power 1 into centimeter to the power -3 is the CGS unit of density. कोड जानिएला एई जो फार्मूला
मास जगह ग्राम जेहेतु ग्राम रे एक्सप्लेन करा जाए सीजीएस यूनिट रे मास को एवं लेंथ को कोथरे मेजर करा जाए सेंटीमीटर सेंटीमीटर रो -3 डू अंडरस्टूड माय स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमकेएस यूनिट रे केमति हवा ना मास कैन बी एक्सप्लेन बाय द एमकेएस इज केजी टू द पावर 1 इनटू लेंथ को कोथरे मेजर करा जाए मीटर -3 so kg1 into meter -3 is the mks unit of density एही भली भाबरे पूरा 10 टी फिजिकल क्वांटिटी रो एमकेएस और सीजीएस को हमें लिखि चलिबा 4 that is speed speed रे कोन फार्मूला थिला that equal to केते distance divided by time distance divided by time that equal to केते हबो l by t that equal to l1 t minus 1 so finally यार देखो l सीजीएस राशि सेंटीमीटर 1 into टाइम को सेकंड to the power -1 centimeter 1 into second -1 is the unit of CGS of speed that is mks रे कोन आसीबो meter 1 into second -1 that is the CGS similarly fifth velocity v velocity explained by the displacement divided by time displacement ment by time that is v is equal to say displacement but also a length that is l by t is equal to l1 t minus 1 एवं स्पीड रो डायमेंशन जहा स्पीड रो डायमेंशन जहा वेलोसिटी डायमेंशन से थिला एटी मध्ये स्पीड रो यूनिट जहा तार वेलोसिटी रो यूनिट मध्ये से रहइबो दैट मींस सेंटीमीटर 1 into second -1 meter 1 into second -1 then sixth रे कोन आसीबो acceleration that is acceleration can explain by the velocity divided by time and that equal to velocity explained by the MLT form L1 t minus 1 divided by time is t that is equal to L1 t minus 2 and which can be explained by the CGS unit that is centimeter 1 into second minus 1 and meter 1 into second minus 1 एबे ऊपर लिबेबा 6 पर 7 that is force सेवेंथ रे कोन आस्तिला फोर्स सेवेंथ रे आस्तिला फोर्स F which can be explained by help of mass into acceleration mass into acceleration and that equal to m into acceleration L हम mlt आरो साइड रे करबा that is F equal to m1 into L1 t minus 2 L1 t minus 2 देखो एटी अछि मास रो 1
that means kg mass ro 1 means केता आसला mass ro 1 माने kg sorry एटी आसो ग्राम ग्राम 1 into length 1 means centimeter 1 into time माने second minus 2 clear my students so CGS unit of force is gram 1 जेतु mass 1 अछि ग्राम 1 हैला length 1 अछि centimeter 1 हैला time minus 2 अछि second minus 2 हैला similarly आमे जदि mks unit ता लिखिबा केते आसीबो that is kg1 into meter 1 into second minus 2 मने रखिथिबो एटी CGS रो another unit of force is dyne and mks unit another unit is that newton याकु मध्य SI unit कहा जाए mks unit रो अन्य नाम होची SI unit what is this SI unit so force रो दीटा में यूनिट जानले गोटे होची CGS unit रो mks unit पर CGS unit रो another unit जानले that is dyne और mks unit रो another unit जानले newton बहुत जगह रे न्यूटन को शॉर्ट लिखा जाए कैपिटल N डाइन को कैपिटल D आकर लिखा जाए पारियो क्लियर नेक्स्ट 8 work can be explained by the force into displacement and that can be explained by the m1 l2 t minus 2 and आमे आपको यदि एक्सप्लेन करबा m1 अछि that means gram 1 l2 अछि that is centimeter 2 and t minus 2 अछि that is second minus 2 आमे ए mlt convert ru सबु mk सब CGS unit लिख परिबा इजीली मास लेंथ टाइम को लक्ष्य करी मास र पावर केते अछि CGS र मास को ग्राम रे कोआ जाय ग्राम रे एक्सप्रेस करा जाय तार पावर 1 लेंथ को सेंटीमीटर तार पावर 2 टाइम को सेकंड तार पावर -2 क्लियर सेमदी CGS mk स आसीबो kg1 मीटर 2 एंड सेकंड -2 एमन करे अनदर यूनिट मध्ये अछि दैट इज आर्क एंड जूल और होची तमरो CGS unit of work and joule होची mks unit of work another unit that is also SI unit of joule आउ CGS unit होची और करके मध्ये जाने लिखि पारिबो जेहेतु सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अछि फोर्स रो आपण कहले डाइन CGS unit उटे डाइन इनटू डिस्प्लेसमेंट डाइन इनटू सेंटीमीटर जण कहि पारिबो CGS unit of work डाइन इनटू सेंटीमीटर जण कहि पारिबो mks unit of work मध्ये जणे न्यूटन इनटू मीटर मध्ये कहि पारिबो क्लियर एई भली भाबरे तमे ताको मने रखिबो 9 नंबर रे कोन अछि 9 नंबर रे कोन थिला मोमेंटम ना प्रेशर कर प्रेशर P explained by force divided by area and that is P is equal to force अगर मैं केते लिखिबा that is m1 l1 t minus 2 divided by l2 that is equal to m1 l minus 1 t minus 2 and finally ए जो mlt को लक्ष्य करके हमें लिख परिबा kg ना सॉरी एटा CGS unit ग्राम 1 into centimeter minus 1 into second minus 2 और करी जने लिख परिबो डाइन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर एटी से लिख परिबो kg मीटर -1 into second -2 और
Newton divided by meter square. And the last one is that linear momentum. दी प्रकार momentum अच्छी, संवेग दी प्रकार अच्छी. गोटे हूँ एंगुलर मोमेंटम आ गोटे हूँ लिनियर मोमेंटम. आम ये लिनियर मोमेंटम, linear momentum also represented by P, and that P is equal to mass into velocity, and that P is equal to S1 mass m1 velocity l1 t minus 1, and the CGS unit is gram centimeter second minus 1. जेहेतु P is equal to m1 l1 t minus 1 अच्छी, तेणु ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 इंटू सेकेंड माइनस 1. ए साइड आसो केते kg 1 इंटू मीटर 1 इंटू सेकेंड माइनस 1 और करके लिख परिबा mks यूनिट आस जीवो, दैट इज mks यूनिट से आई आसीबो kg 1 मीटर 1 सेकेंड माइनस 1. दैट्स ऑल. सो पिला माने देखा मु 10टा फिजिकल क्वांटिटी रो फार्मूला लिखली एवं सेमान को केमिति mlt रे कन्वर्ट करा जाउची विथ रेस्पेक्ट टू पावर ताकू सिकेली एवं से पावर को लक्ष्य करके आमे यूनिट्स लिखि पाले. एसआई यूनिट और mks यूनिट cgs यूनिट लिख पाले. तस सहित आमे डायमेंशन फार्मूला लिखिले. स्क्वायर ब्रैकेट भीतर केमती m रो पावर केते रहउची, l रो पावर केते होउची, t रो पावर केते होउची ताकू प्रोडक्ट आकार लिखिले एवं ता डायमेंशन को मध्य शिखले. एई बळी आहुरी गुडाय फिजिकल क्वांटिटी अछि ताकू तमे धीरे धीरे बही रे सॉर्ट आउट करिवो एवं मन रखिवो. एई केतेटा फिजिकल क्वांटिटी को बेस करके तुम परीक्षा रे डायमेंशन फार्मूला यूनिट्स आसीबो. सो आज का पई हमें 8 रहिबा. नेक्स्ट क्लास रे हमें आउ किछि डायमेंशंस बाबद रे पढिबा. थैंक यू, टेक केयर.